नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। अपने सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिवादन करता हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट के इस प्रांगण में, जहाँ पर आज एक बुक रिलीज का फंक्शन है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो बुक लॉन्च होने वाली है उसका नाम है पोइम्स बाय J72 म्यूजिंग बाय जाह्नवी शर्मा। जी हाँ, जाह्नवी शर्मा जो कि ऑथर हैं, पोइट हैं और एडवोकेट हैं। साथ में आज के इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिसेज माधवी दीवान, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और साथ में जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस सोहेला कपूर, जो कि एक्टर डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड का जाना माना नाम है। उसी के साथ यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के रूप में होंगे मिस्टर ऋषभ गुलाटी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं जो न्यूज एक्स चैनल के। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में, आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट के इस प्रांगण में, इस हॉल में, जहां पर इस बुक रिलीज का कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ जाह्नवी शर्मा जी हैं जिनकी आज बुक रिलीज है। तो मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आज बुक रिलीज है वो किस तरह की बुक है, उसमें आपने क्या लिखा है, क्या दर्शकों को देने वाली हैं। हाँ जी, तो ये एक पोएट्री बुक है। इसमें मैंने बहुत सारी जो पोएम्स लिखी हैं ओवर द पास्ट डेकेड, उन सब का कंपाइलेशन है जो मैंने एक किताब निकाली है उसमें। एंड ये मोस्टली नेचर रिलेटेड है एंड इट इज़ रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ एंड हाउ वी सी थिंग्स एंड हाउ यू ऑब्जर्व थिंग्स। और इसमें मैंने कोशिश ये करी है कि वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन वाइल्ड लाइफ, बिटवीन नेचर and our daily city lives, which are not so beautiful in many ways. कितना टाइम आपको इस किताब को लिखने में? 10 years. 10 साल। 10 years. Compilation of 10 years. इससे पहले भी कोई बुक रिलीज आपकी हो चुकी First, हैं? first book, first author. Yeah, first time author. की खुशी का अवसर है कि आपकी पहली बुक आखिरकार रिलीज होने वाली है 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद। तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कुछ खास पाठकों को कहना चाहें? मैं कहना चाहती हूँ कि ये किताब उनके लिए है जिन्हें लाइफ की स्ट्रगल से थोड़ी सी ब्रेक चाहिए एंड दे वांट टू गेट लॉस्ट इन सम ब्यूटी, सम ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड लिटिल बिट इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो उनके लिए ये किताब है और जिनको पोएट्री पसंद है उनको तो मैं सोच रही हूँ कि पसंद आएगी ये किताब। लानी भी चाहिए। हम भी सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि मैडम की बुक को जरूर पढ़ें, उनकी पोइम्स को। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके कौन खास लोग आने वाले? आज हमारी चीफ गेस्ट है मिसेस माधवी दीवान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस सोहेला कपूर एंड स्पेशल गेस्ट इज मिस्टर ऋषभ गुलाटी, मैनेजिंग एडिटर ऑफ न्यूज एक्स। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ कर्नल विनोद कुमार शर्मा, जो कि जाह्नवी शर्मा के पिता हैं। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल सांची बात में। धन्यवाद। और आज बहुत ही शुभ अवसर है कि आपकी बिटिया की जो 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी किताब आखिरकार लॉन्च होने वाली है। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है कि बचपन से ही जाह्नवी को कुछ कविता वगैरह लिखने का शौक था और हर धीरे धीरे कभी भी किसी सिचुएशन में पोइट्री की अपनी इमेजिनेशन से वो कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखती रहती है और फिर उनको कंपाइल करा उसने। और मैं बड़ा हैरान था कि उसका फील्ड अलग है बिल्कुल। एक लॉयर की साइड में गई है, लॉयर बनी है, फिर भी उसने अपनी एक क्रिएटिव जो क्रिएटिविटी को बनाए रखा और इसको परसू किया। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि उसकी पहली बुक लॉन्च हो रही है और मुझे यकीन है कि ये उसकी इसके बाद कई बुक्स आएंगी। जी, हमारी भी शुभकामनाएं कि इस तरह से आती रहे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए। तो जो आज ये किताब जो लॉन्च हो रही है, इसके पब्लिशर कौन है, कुछ बताना चाहेंगे? इसके पब्लिशर एक सेवर एंड क्विल हैं, एक पब्लिशर्स, वो इनके पब्लिशर। हाँ। बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू सो मच।
Which is very beautiful, lyrical, romantic, all of that, very imaginative. And my training as a lawyer compels me to, to adhere to pleadings, to precision, to hard facts, to evidence. And it's a very, very far, it's a world far removed from the world of, as I said, imagination and romance and color. So I've tried to make it up by dressing in a lot of color today. Hopefully that will, yeah. But, I was just trying to think which of our fraternity in the law, because Jahnvi straddles both, was a real poetry lover. And I can think of one lawyer and a great lawyer whom we lost to COVID nearly 2 years ago, Mr. Soli Surabji. And he was a great connoisseur of poetry and would often invite friends to come and visit his library of poetry. And so I think that is really special, and I think that that's possibly what Jahnvi was trying to say when she said that. So I will end there, and all the very, very best to you. I wish you new endeavors. Um, and of course, I'm going to quiz you at some point on what you really meant when you spoke of gowns. Uh, and some of the verbs and adjectives that you use are interesting. Thundering gowns, I'm not sure what you meant, but I will quiz you separately on that. But in the meantime, all the very, very best and congratulations. I have about 3 poems today, which I'm going to recite. And for the rest, you have to buy the book. So the first one is called High Seas. And here it goes. What we can't understand, we let get out of hand. What we can't comprehend, we ask, to what end? What we can't get ahead of, we simply cast off. When we lack the foresight, we try and bury the ice. When we fail at sea, we try to flee. What we feel is too big an ocean, we cover up with altruism. What we feel is a threat, we barter on another's chest. What we perceive as a dead end, raising sleeping monsters under the bed. What we see is what we believe. When we see and yet unsee. What we feel but refuse to reveal. When we try but fail, and the failings we hide in sight's plain. Is it that which we preach? Unknowingly, unspokenly, unthinkably, and untouchably? Is it that which we breed? To future generations and to fellows within our reach? Is it that which we heed? When times get rough and ahead lie the fury of the high seas. First one. This is dedicated to all the lawyers, and they're free to decide what each word means and interpret it. Sounds of, it's called Gowns of Iron Casts. Sounds of the distant past, now like a chime, form a hovering cast. Gliding in the glory vast, wallowing in attention, swell from the start. A snide comment, a joke lost in delivery, a superseding attempt. In the midst of a conversation, an epiphany. A little laughter, and the eagles skyrocket. A better punchline, and the other side controls the damage. Who will win the argument? Who will appease the grand jury? Who will be the hero of the hour? Who will be the morning trophy? Who will have the last laugh when the chair demands, but so does the gown half? Who will walk with flying colors or rise prematurely if it is indeed
the need of the hour. The gowns of glory passed, facing each other, trying to have the word last. These gowns have solid power, debating questions where the law is thy love, the court their fortified tower. These gowns they stand among the masses, thundering like colonial colossus. When the crowd is left aghast and memory has turned to dust, were the children honored, the patient petitioners carefully tutored? Were the clocks fleeting and the mics screeching? There, among the hustle and the bustle, amidst all the stories and the tussles, standing tall were gowns of iron cast. So this is, if you read my book, this is the poem that I'm ending the book with, and it is called The Final Leap. And it is actually about two people who have a certain disability, and it's the story. So this is how it starts. Tiptoed, she opened the door, running from the light. What the light can bring, she will never know, said the hitchhiker, streaming past his right. Little did he know, in life we grow, changing all the time. The little girl, once full grown, shined in plain sight. As she took her first flight, it was a wondrous delight. Her gifts are sublime, said the world from behind. Life is a journey that must be rejoiced. Which way to go, our very choice. Life isn't a project or a game, and definitely not a means to defame. As she soared heights, she created her own light. Despite her weak eyes, she was a dime. Oh, what hue and cry. And then one day, amidst the cheering crowd, a similar face arose. Even in the dark, his weak eyes glowed. For what the hitchhiker never told was the secret he too was blindfold. To nudge her is all he tried. This shining knight always has a disguise. What the hitchhiker saw, she would never see. What he taught her was the final leap. Thank you. To our esteemed guests and audience. You've always been really patient with us in almost all the plays that you watch and here as well. So the topic today that on which we are having a discussion is poetry in post-modern era. So post-modern era technically means post World War II. So that is around 1945 when the World War ended and the post-modern era started. And there are a lot of poets. But for a modernite, this topic will be a little different. It will be post-modern era means that post you passed out from modern school. So that's what our poetess is. And just to introduce myself and my association with her, we somehow share some eternal bond, which we realized both of us after we passed out. I have played her screen father in two plays, and in both of them, I launched her in her matrimonial life. And I am sure her parents would be looking forward to that day. I'm sure. So, and here I am on the launch of her first book. So, heartiest congratulations, Jahnvi. Just a few words about Anurag. He has been a classmate, and I have always seen him dancing on tunes of his wife and his lover, Priyanka. And we never understood how he learned to play flute, and now he's playing it so fluently. So I'm sorry, yaar, कहना नहीं चाह रहा था, but we are proud of you. Sorry. It was a great fun session that you managed because the answers were certain answers were totally towards the panelists, but you made it very wholesome for everyone. Thank you so much. I would like to request Rishabh Gulati sir to please grace the occasion and say a few words. All right, having already said more than a few words and feeling so embarrassed among so many seniors sitting in front of me, I'm going to pretty much leave it here. Jahnvi, let me address this to you more so than the audience. What you're doing is not easy to do. Have a professional life and within that keep an
artist within you. What is even more difficult is to have the courage, and perhaps many of us are artists here, but don't have the courage or even the slight initiative of doing something with it. And who knows who will be inspired today? Who knows if I go back and dust off some of my books, as ma'am has just mentioned she has. So maybe don't quit the day job. Okay, I mean, wait for the sales numbers from Amazon first. Okay, before that's it. Give up your bar card. But maybe, right? I remember there's another lawyer, Satyajit Sarna. That's the last poetry book I actually purchased. He's a very good friend of mine. And perhaps there's an opportunity here for many of us to reinvent ourselves and rediscover a little bit of philosophy that has to guide whatever we do. In my profession, and I'm sure in yours, in the tedium of it is, and the discipline it demands, and the many, many hours of service and labor it demands, you have to be philosophy. You have to be somewhere, a tune has to be in your mind, calming you through rough waters. So, Jahnvi, thank you for this treat of a book. And the sales plug I've already mentioned. You all have internet, Amazon, it's happening. 3 days delivery time. Thank you so much, sir. You saved our money and time on marketing. Thank you so much. And now I would like to request Sohila Kapoor ma'am to please impart a few words for the audience and for the panel. Good evening. First of all, my apologies for being late. I was tricked by the map. One of those rare occasions when I drove, which is foolishness. And the map drove me into many one-sided streets. Which was being poetic. It was being very. It just wanted me to stay there and unending streets with just no exit. No, it wasn't hers. It was the map. And of course, the massive traffic jams. I thought I'd have an easy access to the roads, but I live near Ashram. So you know how it is. It's a nightmare, and India Gate is a nightmare. So it wasn't a Sunday for me. Okay, we were talking about the connection between law and poetry. There's something I would like to add here. That's why I raised my hand like a student. I think there is a connection. And what is the connection? Lawyers need imagination, like poets. Language is very important. Your language is so clear. It has to be extremely clear for both parties to be able to understand, for the judge to be able to understand. And it's the same thing with poetry and journalism, on even if you're writing art. Language of communication, it's also an insight into life. Isn't law an insight into life? So is poetry. And law gets its meaning with interaction with culture. Law cannot stand outside culture. It's within the culture. If you're talking about Indian law, it's within the Indian culture. So what is culture? Poetry is very much a part of it, in this, there's a quotation which I like very much. In this respect, we must think of the law as the software which can function effectively only within the operating system of a culture. So there you have the connection. And poets who have included the theme of law in their poetry. Chaucer, Shakespeare, Alexander Poe, Shelley, and Sandwell. They've discussed in their poems, they've discussed law. So at this point, I will end with just a little poem which I couldn't resist by W.H. Auden, the relation between the two. He wrote, "The hidden law does not deny our laws of probability, but takes the atom and the star and humans for what they are, and answers nothing when we lie. It is the only reason why no government can codify and verbal definition mar the hidden law. Its utter patience will not try to stop us if we want to die. If we escape it in a car, if we forget it in a bar, these are the ways we are punished by the hidden law." Respected senior, family, friends, and colleagues, I thank you from the bottom of my heart for coming out today on a Sunday in support of this event, this book, and my poetic endeavors with such love, warmth, and enthusiasm. I never thought I would be a poet at this stage or poet period, but
I am truly humbled and grateful to each and every one of you sitting here. I would like to thank our chief guest, Mrs. Madhvi Dewan, ma'am. I would like to thank our guest of honor, Ms. Sohela Kapoor, ma'am. I would like to thank our special guest, Rishabh Gulati, not just for what he said, but for marketing my entire book so amazingly today. I didn't hear that. You can contact him. I would like to thank Sri Amitabh Kanji, who graciously and so sweetly gave me a forward for this book. I would like to thank the publisher, Saber and Quill, for providing support to a first-time author like myself, and they gave me my contract within 24 hours of getting my soft copy. So yeah, that was unbelievable. I would like to thank my battalion of friends who are like family, without whom this event would not have been possible. Daksha Didi for anchoring the event so well. Mannat, who's outside, for managing the sale of the books today. Sana for making all the posters and everything. Gautam for bringing the muscle. Udit for bringing the muscle. Shashat for bringing the food, which you're going to just have. Udit, again, muscle. Angad, who was here, it has gone out again. Atin sir, for being, karmically in the center of every important event in my life. For Anurag sir, for almost bringing tears to all our eyes with your music in a good way, in a happy way. Priyanka Didi, for, just making sure everything just goes perfectly. Prakash, for coming in and helping out. Sundar sir, who's written a blurb for my book as well. Ashish, I can see you. Dhruv, hi, thank you for being here. And Ruhani, for being here and supporting us and helping us. Paritosh, for the anchoring. I would like to thank the people who brought me on this earth, my parents. By the way. And Tripta Masi, sitting over here. I would like to thank Professor Manoj Sinha for graciously opening up this place and his room and all the other rooms on a Sunday, and for giving us full support staff and everyone, just being here and helping us organize this event. I would also like to thank Ashok uncle, Ramanti, and their daughter who were here to attend this event. And it's true, this book is dedicated to him, and it wouldn't have happened had it not been for him and his support. So, thank you all. We have high tea now organized for everyone, and Paratosh will get on that. हमारे साथ ऋषभ गुलाटी जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्पेशल गेस्ट थे आज के इस कार्यक्रम में। न्यूज एक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस बुक लॉन्चिंग के अवसर पर आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? किस तरह की बुक है, कुछ बताएं तो। देखिए, किताब पोइट्री कविताओं की है, और ये कविताएं जो हमें कहानियां बताती हैं, नौजवानों की कहानी, सोच की कहानी, हमें क्या रोक के जिंदगी चर्चा करनी चाहिए, उनकी कहानियां। तो मैं यही बोलूँगा लोगों को, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि देखिए, कविताओं में हम कीमत क्या ढूँढें कि हम जाके किताब खरीद के आएँ। शायद मौका मिलेगा इस किताब को कि वो कविताओं में आपको कीमत दिख जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने इस कविता के माध्यम से अपनी बात को बताया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ बॉलीवुड की जानी मानी एक्टर एंड डायरेक्टर मिस सोहेला कपूर हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज ये जो कविताओं की जो किताब जो रिलीज हुई है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं जाह्नवी को जानती हूँ, मेरी एक्ट्रेस रह चुकी है प्लेज़ में। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ब्राइट है, हँसमुख है, तो जब उसने कहा कि वो पोएट्री लिखती है, मैंने कहा अरे वंडरफुल! मैं ज़रूर आऊँगी, आपकी जो इनॉग्रेट आप करोगे। तो मुझे अच्छा लगा है, और यहाँ पर डिबेट हुई थी कि भाई पोएट्री और लॉ में कनेक्शन क्या है? व्हाई एक लॉयर क्यों पोएट्री लिख रहा है? सर क्यों नहीं? इमेजिनेशन है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, ह्यूमन कंडीशन इनसाइट होती है एक ह्यूमन लाइफ में। लॉयर को ये
इन सब चीज़ों में माहिर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, एक वकील भी तो एक इंसान वकील, है। हाँ, वकील भी इंसान है। जब तक उसको अपने क्लाइंट की बैकग्राउंड नहीं पता चलेगी, उसकी कंडीशन नहीं पता चलेगी, जब तक वो साफ भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में आर्ग्यू नहीं करेगा, जब तक वो अपने इमेजिनेशन यूज़ करके अच्छा केस नहीं बनाएगा, जी। तो वो सक्सेसफुल कैसे होगा? सेम थिंग विद द पोएट। तो आप नहीं कह सकते, जैसे आप कह रहे हैं ना आर्ट और साइंस में डिवीजन है, नहीं है। सब एक होल के अलग-अलग हिस्से हैं। सिमिलरली लॉयर एंड आर्ट, जो भी लॉ या साइंस में जाता है, वो एक किस्म का आर्टिस्ट भी होता है, उसके अंदर छुपा होता है। इसी तरह वो एक होल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। पूरा इंसान जिसको कहते हैं ना, उसमें वो कॉम्बिनेशन होता है। मेरे ख्याल से तो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो एक आदमी जो है कहीं न कहीं कलाकार तो वो है ही अपने आप में। कलाकार, साइंस भी एक कला है। जी, आप कैसे क्या कहोगे कि साइंटिस्ट कलाकार नहीं है? है ना? जी। जी, थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रोफ़ेसर मंजुला बत्रा जुड़ चुकी हैं, जो कि जाह्नवी शर्मा की माताजी हैं। बहुत स्वागत है हमारे साचीवाद चैनल में। बहुत ही शुभ अवसर है, आज आपकी बिटिया की जो है बुक लॉन्च हुई है। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे अपनी बिटिया के लिए, इस बुक के लिए? अ, बहुत खुश हैं हम सब कि उसने ये किताब छापी है। इट्स द फर्स्ट बुक दैट शी इज़ गॉट प्रिंटेड, बट आई होप कि अब जब फ्यूचर और हम फॉरवर्ड होंगे तो उसको लॉ के ऊपर एक किताब ज़रूर आनी चाहिए मुझसे। तो वो मन है कि अब उसकी कानून के ऊपर, जो एक्चुअली उसका प्रोफेशन है, अब उस पे एक किताब निकाले। और पोइट्री को भी एक्चुअली इम्पोर्टेंस दे तो वो दे रही है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि एक कला में उसकी दिलचस्पी है। एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट, एंड एज अ मदर आई ऑलवेज सपोर्ट हर। जब अपनी फ़ील्ड से हट करके उन्होंने लिखना शुरू किया, तो डाँट पड़ी कभी क्या उनको? नहीं, मैंने कभी उसे डांटा नहीं है बिकॉज वो स्कूल से लिखती आ रही है। और लिखती आ रही है और मैं पढ़ती भी जा रही हूँ, और हमेशा कहती थी मामा इसको पब्लिश करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो मैंने कहा हाँ कर दो, लिख लो, कंपाइल करो, आई एम विद यू। सो माई सपोर्ट विल ऑलवेज बी विद हर वट एवर शी डज। बहुत ज़रूरी भी है एक माता-पिता का सपोर्ट अपने बच्चों को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या या। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूँ, और ये जो बुक लॉन्चिंग का जो कविताओं से सजी किताब थी, जिसकी आज यहाँ पर रिलीज हुई, आपको ये कैसा लगा, ज़रूर अपने विचार और सुझाव हमसे साझा कीजिएगा। हमें आपके विचारों का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, और इसी तरह आपके सुझाव और विचार हमसे साझा करते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे साचीवाद को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।